award known to mankind in music, several national awards, Filmfare Awards, and the first woman to perform in Royal Albert in 1974. Truly, we have lost her, but she will never die because her songs will live on. And I remember how the nasal tone, I consider myself a bit of an aficionado of Bollywood music, the nasal tone of Noor Jahan, Shamshad Begum, Zohrabai Ambalewali, very, very haunting in their own way. For the first time in the 50s, a voice came which was non-nasal tuned. And that was the thin, limpid, clear as gurgling water voice of Lata Mangeshkar. And I think the world, the field of music, India, particularly Goa and Mangeshi, have suffered an irreparable loss. Friends, let me start with the press conference which is scheduled for today. If Goa is indeed the paradise of India, friends, I believe that BJP is the malaise of Goa. As they say, it is going to be Goa, Goa and gone for the BJP. There are so many things I could discuss about misgovernance and non-governance here, about some of the nastiest unemployment rates in the country, the lowest GDP in the whole country, including all states of India and union territories, per capita in the last 2 years in Goa. The Honorable Prime Minister of India promoting tourism, trade and technology. He called them the 3 T's, T for telephone, tourism, technology and trade, just 2 days ago. And those very same 3 things suffering terribly in Goa, in his own backyard. And the destruction of the basic livelihood of fishermen. And so on and so forth. I could go on and on and on, ad nauseum, ad infinitum. But given the time constraints, I will concentrate on 3 broad themes. The first theme, friends, is the destruction of all ethical, moral, political and constitutional values by the ruling BJP. As it has done nationally, so it has done in Goa. And let me give you an example of how shamelessly it has done so. How shamelessly it has created artificial, non-existent majorities. It did it from Manipur to Goa. It tried it in the midnight matter. I had the privilege of appearing in Karnataka and Maharashtra. So जहाँ चल जाए वहाँ चल जाए, प्रयत्न हमेशा प्रयत्नशील रहता है, सदैव. Now in Goa, I am not talking about the 10 MLAs etc. of 2019. I want to illustrate how the BJP preaches to you every day, every moment, sermonizes, preaches without practice, sermonizes without shame, and that poaches without pause. This is the sad alliteration, not the music of Lata Mangeshkar, but the sad alliteration of the BJP. It preaches without practice, sermonizes without shame, and poaches without pause. Not the 10 MLAs of 2019, but equally bad is what happened after they created that artificial majority. And this really illustrates the Chal Charitra and Chehra of the BJP. Shortly after this happened in 2019, the complaint was filed about corrupt practices. And note the date when it was filed, 8th of August 2019, to an office who is supposed to be the custodian of these legislative values, the Speaker. 8th of August 2019. What does the Speaker do on the clear instructions of his master, the BJP? For 21 months, he sleeps on it. Kumkaran slept only for 6 months. The Honourable Speaker, in the most egregious abdication of constitutional values, decided not to decide.
decided not to decide. And after 21 months, on 21st of April 2021, he rejects. He rejects a clear, egregious, blatant violation of the defection law. He rejects the complaint. It is of course now sub judice and pending in the High Court. But what is the point I am making? The point I am making is that from the luring, from the poaching to the delay, all this is designed for the BJP machine making artificial majorities. To take advantage, because after 24 months, the fruits of the poisoned tree have been utilized in whatever way the BJP wants. And let me end this farce by quoting to you a lament by one of our most outstanding judges, Justice Nariman, who incidentally said it in the same context of another state where the BJP has done it, Manipur. These delaying tactics after encouraging defections and deciding not to decide, and I quote the Supreme Court judgment in Manipur, and it reads thus. I'm not being legalistic, I'm telling you the Chal Charitra and Chehra of the BJP. Indeed, I'm quoting the Supreme Court. Indeed, the Speaker, in acting as a tribunal under the 10th schedule, is bound to decide disqualification petitions within a reasonable period. What is reasonable will depend on the facts of each case. But absent exceptional circumstances for which there is good reason, a period of 3 months, mark my words, 3 months from the date on which the petition is filed is the outer limit within which disqualification petitions filed before the Speaker must be decided if the constitutional objective of adherence to objective of disqualifying persons who have infracted the 10th schedule is to be adhered to. This period has been fixed keeping in mind the fact that the ordinary life of a Lok Sabha or the Assembly of the states is 5 years, and the fact that persons who have incurred such disqualification do not deserve to be MP or MLA even for one single day. तो आपने देखा वक्तव्य, उपदेश और सच्चाई के बीच में जो इतनी बड़ी खाई है, और in the middle of all this, our armchair critics of the Congress, some so-called committed people, lament the fact that somebody robbed somebody's house, but never condemn the thieves. They lament and tell you that, "Lo, you should have locked your house better." What kind of strange inverted logic is this? अरे आपने चोरी की तो चोर का कोई खंडन नहीं, भर्त्सना नहीं, उल्टा जिसके घर चोरी हुई उसको कहा आपने घर पे दरवाजे पे लॉक ठीक नहीं लगाया था। ऐसा तो मैंने कभी, तर्क है या कुतर्क है मैं नहीं जानता। Friends, my second theme is about the new kid on the block. The new kid on the block is AAP, which after a disastrous start in 2017, a shunya start, is now promising to you what I call the DDM, the Delhi Development Model. I hope the DDM is not like the DDA. When I started practice in Delhi, the DDA we used to joke, and it is still use the same acronym, the DDA stands for Don't Do Anything Authority. But of course, the DDA is under BJP control in Delhi. So I hope the DDM of the AAP is not like the DDA of the BJP, both in Delhi. And let me tell you that the speciality of AAP is to create a smoke and mirrors image of illusory reality. It's an illusion of reality by lots of smoke, lots of mirrors, and create so much noise, do so much Goebbelian publicity, do so much projection that people start believing in some illusion of reality. So let us now see how much is real and how much is illusion in this DDM, the Delhi Development Model, because that's what you are promised in Goa.
And the question you have to be asking is, do you Goans want this model of Delhi? I'll give you only, I don't have time for more, I'll give you only 5-6 examples, there are many more. India Today did a data intelligence unit check, and they found that of the 70 promises made by the AAP in their manifesto in writing, they found that of the 70 promises, work was finished on only 31% and pending on 60% from when they made the manifesto in 2015 and when they ended their term. But so much noise about 31% work as if everything is done. This is a statistical figure by a data intelligence unit of a leading channel. It's not the Congress figure. Number 2, and all this is written, and it is again and again promised, it is promised similar things with different figures in Goa. They promised in Delhi a compensation of 50 lakhs to deceased Safai Karamcharis. RTI found that 50% had not received anything, and the 50% who had received 1/5, 10 lakhs. In the 2020 manifesto, after underperforming by 1/10, because half didn't receive, and of the half who received, they received 1/5. So after underperforming in the 2020 manifesto, AAP has brazenly increased the compensation to Safai Karamcharis to 1 crore. क्या जाता है? मैं 5 करोड़ कह देता हूँ आपको आज. मेरा थोड़ी जाता है कुछ, मेरे को तो सिर्फ एक पत्ते पे देना है. 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़. उसको उपलब्ध तो करवाना नहीं है. My third example, education and health are projected as major achievements as the Delhi development model. Did the AAP build 500 schools as written in their manifesto? Unless there is Alice in Wonderland counting, nobody can count even 50. 500 schools. There is a 45% shortage in the existing Delhi government schools. These are all published figures. Nursery admissions will be centralized was a specific promise. Now officially the AAP has given up, saying it is impracticable. They promised 20 new degree colleges in Delhi. Just last week they started blaming others. They have not opened anything except one called Delhi Pharmaceutical Science and Research University. 1 out of 20, and shifted the blame game. Then again on health, they had said that Delhi will have 5 they will increase beds to 5 beds per 1,000 of population. The figure is exactly half, 2.9 per 1,000. No promise is fulfilled. The Delhi Development Authority is only to grab votes by misleading, as I said, creating a smoke and mirror illusion of reality. Adequate street lighting, not done. Solar city and Wi-Fi city. Everybody knows who's in Delhi that they have been promising Wi-Fi and solar city, both. This is a chimera. Hardly a fraction of the percentage promised has been done. Last mile connectivity we will provide by having 5,000 buses taking you from where you get down from the metro to the last mile. Out of 5,000, not even a few tens would be there operational on the road. There is no question of last mile connectivity except in slogans. Of course, I am not touching on pollution, because when I come to Goa, I hope your AQI or whatever it is figure doesn't come anywhere near Delhi's figure. Otherwise, it would be a very reverse model of Delhi development proposed by AAP. About legislative practices, does AAP tell you how much they shouted from the rooftops about Jan Lokpal bill? But do they talk about it now? Does Delhi have a Jan Lokpal bill which is operational? Does it have a Lokayukt in fact? They used to talk of Swaraj bill. Talk and talk. Gas, smoke and mirrors, as I said. Employment figures, 8 lakh jobs promise. I think it is underperformed by possibly 100 times, more than 100 times. This is the true face of AAP, and I could go on and on.
I have figures for Wi-Fi stations, I have figures for public library. I don't want to get into details, but this is the Goa which is promised this Delhi. 8 lakhs, how many? Delhi believes better. 8 lakhs they promised. Yes. According to us, it is a few hundred till 2017. RTI. But I mean, you can make it a few thousand. We are talking of 8 lakhs. 8 lakhs. So I could go on, but it is clear that the AAP model is very simple. Promise high, deliver low. It is a history of broken promises and therefore broken hearts, and I don't want Goa to have broken hearts. We should not want that in Goa, because they have come here to raise your hopes before election and dash them and belie them immediately after elections. So that is the warning which the Delhi development model should have for Goa. My last and third point is the overall look at industry, unemployment, growth. Be it the incumbent government, be it the promises of AAP, and be it the fly-by-night operators from east of India or other marginal operators who have no stake except to shoot and scoot. I have already said that it is startling, and most people don't know it, that the lowest growth of per capita income, the lowest rate of growth of per capita GDP in the country, India, including all states and all UTs, in last 2 years is Goa. Everybody is suffering from COVID, but why Goa? A supposedly prosperous, coastal, tourist-focused state should have this. The unemployment is frightening. I am quoting to you CMIE figures. It is 7.8 is the national average. Do you know the Goa figure? 12.7. Now, it is another interesting and sad figure I am going to give you. So, national is 7.8, Goa is 12.7 unemployment rate. But I am going to give you a third sad figure. The sad figure is that Goa was March 2021 21%. Why I am saying is sad. So, about a year ago it was actually 21, today it is 12.7%. So, possibly BJP can start clapping themselves on the back. It is like saying that you go to the Grand Canyon, it's got a huge depression, and then you go to a smaller depression and say, aha, if you draw a smaller line against a bigger line, you can be self-congratulatory. खाई बड़ी हो और कुआं छोटा हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने उपलब्धि कर ली है कि 21% बेरोजगारी के दर से आप अब ले आए हैं 12.7%. Agricultural productivity in this state, and I have the figures for many including pulses, I won't give you the figures. Pre-COVID, 2017 to 19, is one of the lowest and falling. Tourism, unfortunately, is the worst. In your state, it is 18% of the economy. That means almost 1/5 of your economy depends on this. And each year from about 12, 11 or 14 lakh tourists. It is down in 17, 18 pre-COVID to 2 lakhs. And I am told that in the COVID years it is 50,000, but forget the COVID years. It has been declining in the pre-COVID years is the point I am making. Ease of doing business, which the BJP and the BJP Prime Minister is talking of every day in and out. The BJP state of Goa is number 18. But for court interventions, the official admitted published figure of tree cutting by this government involving places like the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary or the Molim National Park, admitted figure was 38,000 trees. Not 3,800, 38,000 trees. Luckily the courts intervened. I don't know what Goa is a paradise for, if not for trees, sea, beauty. I will not, of course, quote your own governor or recently retired governor, Mr. Satyapal Malik, who talked about the gross corruption in the Goan ecosystem, the BJP's very own. So, these are only examples, friends. Let me end by saying that both AAP and BJP are misfits amidst the contextual features of Goa. What are the defining features of Goa?
They are Goa's calm shores, beautiful sea beaches, lovely water and rugged coastline. In all this beauty, these are aberrations and misfits which stand out for their angularities. There is a famous saying about Goa, what happens in Goa stays in Goa. But I can assure you that at least these two, AAP and BJP, will not stay in Goa politically or physically. धन्यवाद दोस्तों। मैं अगर संक्षेप में आपको हिंदी में संबोधित कर दूं, मैं जानता हूं थोड़ा समय लग रहा है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि अगर भारत का स्वर्ग गोवा है तो इस स्वर्ग का नरक बीजेपी है। पूरे करके पर्यावरण और संस्कृति का सर्वनाश कैसे करेगी भाजपा गोवा का विकास। विधानसभा में चलता रहा है अवकाश, इसलिए राज्य में चारों तरफ हो रहा है विनाश। गोवा वॉज रिपोर्टेड रिसेंटली कि यहाँ पर 16 दिन की असेंबली होती है वर्ष में, 365 दिन में 16 दिन होती है औसतन। मुझे ये मालूम नहीं था। तो ये आपको शासन और कुशासन और सुशासन का एक मापदंड मिल गया है। सीएम का परफॉर्मेंस भी फेल है, पार्टी भी फेल है यहाँ, इसलिए न बचा है राज्य में पर्यटन और न बचा है भाजपा का संगठन। कई मुद्दे हैं जिस पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कुशासन वाले, शासन के अभाव वाले, रोजगार बेरोजगारी की जो दरें हैं इतनी ऊंची, जीडीपी प्रति व्यक्ति जो भारत के सभी प्रदेशों में सबसे न्यूनतम है। मैं दोहरा रहा हूँ, पिछले 2 वर्षों में सबसे न्यूनतम, यूटी हो या प्रदेश हो। प्रधानमंत्री एक तरफ 3 टीज की बात करते हैं, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ट्रेड, पर्यटन, तकनीकी चीज़ और आदान प्रदान ट्रेड का, और ये सबसे नीचे घुसा दिया है इन मापदंडों में गोवा को। यहाँ पर इतना ज़्यादा खनिज पदार्थों का जो एक बड़ी अजीब सी स्थिति चल रही है कई अरसों से बिना हल के, और विशेष रूप से मछुआरों का। और मैं आपको इसमें एक बिंदु जोड़ दूं कि अभी जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट के विषय में संशोधन आया है, जैसा आप जानते हैं मेजर पोर्ट ट्रस्ट जो एक्ट है वो एक केंद्र का एक्ट है, इसलिए उसको मेजर पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है। कई माइनर पोर्ट ट्रस्ट में संशोधन प्रदेश भी कर सकती है। जो अभी आया है, मैं तकनीकी कानूनी बात नहीं करना चाहता। मैं एक बड़ा सरल प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके ज़रिए, आपके गोवन लोगों से और गोवा के शासकों से। क्या आपने अपने आका के सामने, जो आका है केंद्र सरकार बीजेपी की दिल्ली में, एक चू निकाली, एक आवाज़ निकाली, एक प्रश्न पूछा कि ऐसा कानून आपने पास किया है जिसके अंतर्गत सिर्फ नाम बदलाव की बात नहीं हो रही है कि अथॉरिटी हो गया ट्रस्ट से, जो आपने ऐसे अधिकार क्षेत्र दिए हैं जो गोवा के हर यहाँ के लोकल कानून को, यहाँ का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कानून, यहाँ का डेवलपमेंट कानून, किसी कानून को ओवरराइड कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं इस मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत। और इसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ेगा जब यहाँ पर ज़मीन ली जाएगी, जब यहाँ ज़मीन लेके उसका उपयोग अगर कारण X कर सकते हैं तो कारण Y किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये सूची अंतहीन है, लेकिन मैं सिर्फ 3 मूल मुद्दों पे बात करूँगा। मुद्दा नंबर 1 है किस प्रकार से नैतिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों, राजनीतिक मूल्यों का हनन नहीं, उनको खत्म कर डाला बीजेपी ने, जो कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क हमेशा रखती है। कहती कुछ है, करती कुछ है। जो उपदेश देने और काम करने में कोई भी समता नहीं रखती है। जो दलाली और राजनीतिक अपहरण में विश्वास करती है और उसके साथ साथ उपदेश देती है। तो इन संवैधानिक मूल्यों के विषय में
किस प्रकार से सिर्फ गोवा में नहीं लेकिन कई और प्रदेशों में, विशेष रूप से मणिपुर और उत्तर पूर्व के प्रदेशों में कृत्रिम बहुमत बनाए गए, जो बहुमत है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनको कृत्रिम रूप से बनाया गया, जैसा मैंने कहा राजनीतिक अपहरण द्वारा। और मैं सिर्फ 2019 के 10 व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा दर्दनाक विलंब। 8 अगस्त 2019 को कंप्लेंट हुई और आज 8 अगस्त 2019 की कंप्लेंट में 21 महीने तक माननीय स्पीकर महोदय, अध्यक्ष महोदय ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने निर्णय किया कि हम निर्णय नहीं करेंगे, डिसाइडेड नॉट टू डिसाइड। और 24 महीने या 21 महीने बाद जो निर्णय लिया 31 या 21 अप्रैल 2021 में, इसका एक ही उद्देश्य था कि उस लंबे समय के दौरान जितना फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा बीजेपी गैर कानूनी, अनैतिक और संविधान के विरुद्ध मूल्यों के द्वारा ले सके, इस विषैले दल बदल वाली प्रक्रिया से उतना ले ले। और इस विषय में मैंने अभी अंग्रेजी में आपके समक्ष में वापस नहीं पढ़ूंगा, उच्चतम न्यायालय के शब्द पढ़े हैं, जिसमें कहा है कि मापदंड इन मूल्यों के लिए है कि सबसे ज़्यादा समय भी माने तो 3 महीने में माननीय अध्यक्ष को निर्णय लेना चाहिए। और फिर आगे कहा है, जो मैंने आपको अभी अंग्रेजी में पढ़ा, कि इसका औचित्य ये है कि संवैधानिक मूल्य कहते हैं कि कोई एमएलए और एमपी एक दिन भी ज़्यादा स्थापित नहीं रहे अगर उसने अनैतिक दल बदल के द्वारा वो सीट या वो जगह ग्रहण की है। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरा मेरा थीम है एक नए अवतरण के विषय में, जो अभी एक प्रकार से कल परसों ही पैदा हुए हैं। पिछली बार 2017 में आए थे बहुत बैंड बाजे के साथ, लेकिन उनकी उपलब्धियां उस वक्त 2017 में शून्य थी, उद्घाटन शून्य का था। अब इस बार एएपी आप गोन्स को बता रही है कि किस प्रकार से वो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल लाएगी, यानी डीडीएम। तो मैं यहाँ आया हूँ आपको आगाह करने और चेतावनी देने कि दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल का विशेष मतलब, अभिप्राय क्या है, वो तो जानना चाहिए गोवंस को। क्या गोवा के लिए ये सही है कि उसको दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल मिले, जैसा कि बीजेपी वाला डीडीए था, डोंट डू एनीथिंग अथॉरिटी? ये एक नई सच्चाई पढ़ाई जा रही है, कृत्रिम सच्चाई, हल्ला गुल्ला करके, प्रचार करके, आवाज़ का और कांचों का धुआं बना के आप द्वारा। और इसलिए आपको इसमें चेत होना अति आवश्यक है। क्या है ये सच्चाई? कि दिल्ली में हर मुख्य वायदे पे एएपी सरकार असफल रही है। जैसा मैंने आपको कहा अभी अंग्रेजी में, इंडिया टुडे का डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि जो पिछला मैनिफेस्टो था उनका दिल्ली में, उसमें 31% सब कुछ मिला के अधिक से अधिक उपलब्ध और प्राप्त किया उन्होंने, और 60% बिल्कुल नहीं किया, और 9% में अभी आंकड़े नहीं दे पा रहे। ये आंकड़ा है इंडिया टुडे का। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को 50 लाख देने का वायदा लिखित किया है। जो रिसर्च बताता है 50% को 0 और जो 50% को दिया उनको 1/5वां हिस्सा 20%, 10 लाख। शिक्षा के क्षेत्र में 500 स्कूलें कहाँ हैं? न कांच में दिखती हैं, न धुएं में दिखती हैं। हम लोग तो दिल्ली में हैं, हम ढूंढते रहते हैं कि दिखती तो नहीं है। 500 स्कूलों का वायदा था। 20 नए डिग्री कॉलेजेस का वायदा था। एक बना है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का नाम है, 20 का लिखित वायदा था। नर्सरी क्लास के सभी एडमिशन्स को हम केंद्रित कर देंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे, वायदा था। खुद अपने आप उन्होंने औपचारिक रूप से कहा कि ये नहीं हो पाएगा। अस्पताल के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल के हर 1000 लोगों के लिए 5 पलंग होंगे, बेड्स। वहाँ का पब्लिश्ड आंकड़ा है 2.9। ये पुराने वायदे हैं, अभी के वायदे नहीं है, 5-5, 7-7 साल पुराने वायदे हैं, क्योंकि दूसरी सरकार चल रही है। और इस प्रकार के मेरे पास बहुत और उदाहरण है, मैं नहीं देना चाहता सब आपको। आंकड़े हैं मेरे पास। 5000 बस डीटीसी की होगी, जिसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं। जब आप निकलते हैं मेट्रो से और जाना चाहते हैं अपने
उद्देश्य पे, तो उसके लिए एक बसें लाएंगे। कुछ 10 या 100 में भी गिन नहीं सकते आप ये 5000 बसों को। इतना हल्ला किया गया जन लोकपाल स्वराज बिल, कितना हल्ला किया गया, आप ही की मीडिया के माथे पे नाच नाच के जन लोकपाल का नाम लिया गया। कहाँ है वो जन लोकपाल? बल्कि जो स्थान है वो रिक्त है। झुग्गी स्वराज बिल कहाँ है? 8 लाख रोजगार देंगे। 500-400 भी हो तो मैं समझता हूं आपको मुश्किल होगा गिनना। तो इस तरह से मैं बोलूंगा नहीं आगे, लेकिन मैं मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि आपकी नीति बड़ी सरल है। वायदा बड़ा करो, उपलब्धि नहीं के बराबर करो। और इस ऐसी प्रक्रिया का दिल्ली में कम से कम एक ही परिणाम हो सकता है, टूटे हुए दर्दनाक दिल। क्या गोवा चाहता है ऐसे टूटे हुए दर्दनाक दिल, ऐसे वायदों पे विश्वास करके, जो चुनाव के पहले आपकी आकांक्षाएं बढ़ाना चाहते हैं और चुनाव के तुरंत बाद गायब हो जाते हैं? तो इसलिए दोस्तों, अंतिम जो मुद्दा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है बेरोजगारी का, विकास का, इंडस्ट्री का और सबसे ऊपर पर्यटन का। जैसा मैंने कहा कि यहाँ सबसे न्यूनतम ग्रोथ रेट है पूरे भारत के सभी प्रदेशों में पिछले 2 साल में, सबसे न्यूनतम। CMI का फिगर है 12.7% बेरोजगारी की दर। राष्ट्रीय जो औसतन है वो भी काफ़ी बुरा है, 7.8%। वो अच्छा फिगर नहीं है। यहाँ 12.7 है और पिछले वर्ष मार्च में 21% था। 21% बेरोजगारी की दर। पर्यटन के आंकड़े 12 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 14 लाख से कोविड के पहले 17-18 में 1.5, 2 और 2.5 लाख के बीच में सीमित होकर रह गए। और 18-19 में जो प्रकाशित हैं कहते हैं कि 50,000 भी नहीं होंगे, जबकि इस गोवा की आर्थिक ढांचे की नींव है पर्यटन। 18% इस आर्थिक इकोनॉमी में योगदान पर्यटन करता है। माननीय मोदी जी और अमित शाह जी हर दिन हमको उपदेश देते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विषय में। उनके खुद के बीजेपी शासित प्रदेश में 18वां स्थान है गोवा का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। औपचारिक रूप से मान्य आंकड़ा, अगर कोर्ट कचहरी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, 38,000 पेड़ हनन करने का आंकड़ा, नष्ट करने का आंकड़ा। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, भगवान महावीर पार्क वगैरह इत्यादि, मोलन, उसमें निकला है ये आंकड़ा। अभी अभी यहाँ से भिजवाए गए, डिपार्ट करवाए गए मलिक साहब, गवर्नर राज्यपाल जी ने जो कहा है यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में, उससे आप लोग सब सुपरिचित हैं। जैसा मैंने कहा कि गोवा की सुंदरता, गोवा की पानी, नदी, बीचेस और यहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो बिल्कुल मेल नहीं खाती बीजेपी की राजनीतिक कुरूपता से। और जब इतना फेलियर है पार्टी का हर क्षेत्र में, तो मैं नहीं समझता कि आप और बीजेपी का कोई भी स्थान हो सकता है इस प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे को जब मैं चढ़ा था आज दिल्ली में, तब ये दुखद सूचना मिली और मुझे कई यादें आईं दिमाग में, और मैंने कई ट्वीट भी किए आज सुबह एयरपोर्ट से और यहाँ आने के बाद। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सुंदर प्रदेश की पावन भूमि से, जहाँ गांव का ही नाम मंगेशी है, वहाँ से ये परिवार उत्पन्न हुआ है, गया है। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा प्रसिद्ध भारत का रत्न जो गोवा से संबंध रखता है, मंगेशी गांव से संबंध रखता है, ऐसा भारत का रत्न इस प्रदेश ने दिया है भारत को। जो नाइटिंगेल कहते हैं लता जी को, तो मुझे याद आया जो आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था उनकी मृत्यु पर। और जहाँ तक संगीत का क्षेत्र है, उसको अडेप्ट किया जा सकता है लता जी के लिए।
कि scarce will people of future generations believe that a woman of such flesh and blood, I will say a woman of such flesh and blood giving us such music, walk on planet Earth. ये आइंस्टाइन ने कहा था गांधी जी के बारे में, मैंने अडेप्ट किया संगीत के विषय में. उनका संगीत अविस्मरणीय है. हम सब बॉलीवुड जानते हैं. अगर आपको सूची बनाने को कहें तो सूची, मैंने 3 ट्वीट्स की, करीब 50-30 गानों की. उसके बाद इतनी लंबी सूची है कि ट्वीट अगर 100 भी कर दो आप तो भी वो सूची पूरी नहीं होती है. आप आएगा आने वाला से शुरू करें और ए मेरे वतन के लोगों में अंत करें, या प्यार किया तो डरना कहाँ से शुरू करें, मुगले आजम का. ये एक ऐसी आवाज़ थी. आपको याद करना चाहिए कि 40 वाले दशक में भारत में एक जिसको कहते थे नेसल टोन की, थोड़ी सी नेज़ल आवाज़ आया करती थी. नूरजहां अपने क्षेत्र में सुप्रसिद्ध, शमशाद बेगम, जोहराबाई अम्बाले वाली, कई हमारे जो युवा मित्र हैं जो मेरे साथ बैठे उनको भी शायद याद है कि नहीं इस बारे में, लेकिन हमने उनका भी बहुत संगीत एंजॉय किया. जैसी वो फिल्में आई थी अनमोल घड़ी जिसमें 14 गाने थे, एक में 21 गाने थे, बहुत सुंदर. लेकिन 50 के दशक में पहली बार लता जी लाई हैं, पहली बार वो पतली आवाज़, वो आवाज़ जो एक गरल और सरल पानी जैसे चलती थी. और ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी चीज़ थी. कौन सा उनको अवार्ड नहीं मिला भारत रत्न को अगर आप जानते ही हैं. लेकिन उससे पहले हर फिल्म फेयर अवार्ड, हर राष्ट्रीय अवार्ड, बंगाल साहित्य लिटरेचर, ये जर्नलिस्ट म्यूज़िक अवार्ड, हर अवार्ड. लेकिन वो अवार्ड्स के बहुत ऊपर थी. मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो कभी, जिनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उनका संगीत अजर अमर चिरायु रहेगा. थैंक यू सो मच सर. आपके एक और सवाल है. आम आदमी पार्टी के बारे में आपने बात की, पीएम के चुनावी अभियान जो है वो उसके ऊपर आप कहते हैं. See, you should discuss only 2 main parties, but you can occasionally discuss a new kid in the block who's a pretender. But will you discuss a ship in Iran which is not even visible from the Indian shores? The TMC is like that ship on the choppy waters miles away from Goa. And I don't think you nor us need to waste or spend time on discussing that. I think, forget us, the name you have taken, they themselves realize that a huge splash, one swallow does not make a summer. So you start with a bang, but you end with a whimper. And I think my only concern is that how much better would it have been if everybody had joined hands in the beginning rather than acting in this manner. But now the people of Goa have already delivered a message to such parties. Thank you, sir. Any I question? have a question for you. Sir, if your government come to power, will you scrap these 3 linear projects which are posing danger to our environment and nature? And also the major port bill, which is very dangerous for a small state like Goa. See, I am not here to give any fresh assurances because the assurance you are seeking is already given more than once. I am only reiterating and repeating it. Point 1. Point 2, forget the ones you have mentioned. In addition, anything which is anti-environmental, I would say anti the interests of the blessed people of Goa, who are truly blessed in the environmental wealth which God has given them, will be up for review and rectification. I have no hesitation saying so, but for the specific question you asked, we've already given an assurance. Right. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you.